Good morning, everybody. Good morning. All right. अभिजीत, आपका डाउट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. जस्ट गिव मी सम टाइम. एक फॉर्मेट ऑफ वोट होता है, एक डिलीवरी ऑफ वोट होता है, बट डोंट वरी अबाउट इट. ओके. Okay. We are going to move to our last theme, which is bodies. We were done with local self-government yesterday, right? चलिए. Layer 1, conceptual and factual, and therefore important for the pre. Layer 2, analytical in nature, and therefore important for the means. ठीक है. Now, there is going to be a standard format through which we are going to study all of this. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. When we study layer 1, we study the basic composition and functions. The basic composition and functions of the bodies, and in the prelims, the most likely bodies to be asked are constitutional bodies. And as far as the mains is concerned, you do a body analysis. Now, there are two kinds of questions that usually come from the bodies in the mains. First is you get a structural analysis questions कि भाई कॉम्पोजिशन में क्या प्रॉब्लम है, फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट रिमूवल में क्या प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. And the second kind of questions that we get are correlative issues कि भाई इस बॉडी का फेडरल इम्पैक्ट क्या है, इस बॉडी का सेंटर स्टेट रिलेशंस में इम्पैक्ट क्या है, इस बॉडी का जुडिशरी से इम्पैक्ट क्या है, एंड ऑफ कोर्स सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. सो यू हैव क्रॉस इम्पैक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. These are low hanging fruits. You can never go wrong with these kind of questions, and you should be able to prepare them as easily and as carefully as you can. ठीक है. Now, let's start with the first part. I'll first teach you a little bit of derivations. So first things first. You will often see words like constitutional bodies, statutory bodies, regulatory bodies, right? Oversight kind of bodies, but broadly these are the three kind of words that we often see, right? Now, the basic understanding is that a constitutional body is something which is in the constitution. A statutory body, like a statutory right, is something which is
which gets its origin or which gets its existence from any other law which is not the constitution. An executive body is a body which is formed by an executive order. You do not require any law for it to be made, like the Niti Aayog. So the Niti Aayog is an example of an executive body. The NHRC is an example of a statutory body, and the Comptroller Auditor General is an example of a constitutional body. Now, India follows what is called rule of law, which means if you have the power to regulate anything, then you should have that power under a law. So, constitutional bodies or statutory bodies can also be regulatory bodies. So, regulatory bodies is a classification on the basis of function, whereas constitutional and statutory and executive is a classification based on origin, right? So when we look at classification of bodies, we look at classification of bodies in two ways. First, in terms of origin and in terms of functionality, right? In terms of origin, it's either constitutional body, statutory body, or an executive body. And in terms of function, it is either a regulatory body or an oversight body, or let us say a welfare body, or so on and so forth, right? So for example, let us say the Election Commission of India is a regulator for elections in India. It is a constitutional body, right? The Central Board for Film Certification is a statutory body, right? It is regulating your cinema in the country, right? So the Securities Exchange Board of India is a statutory body which regulates your stock markets. The Insurance Regulatory Development Authority is again your statutory body, right? So there are different kind of bodies. You've got the National Commission for Women, which is often asked in the exam. Is also it's not a regulatory body anymore. It used to be, and therefore it is just a statutory body, but a welfare body, right? So there are different kinds and means and ways to go about it. So National Commission of Women becomes a functional body which is not regulatory in nature but is welfare in nature, right? So there are different kinds of ways and means to go about it. Okay. Now, the first and the most important question is, why are constitutional bodies called constitutional bodies? This is the most important question. Why are constitutional bodies called constitutional bodies? Okay. The kindergarten answer and the most common answer that I get from UPSC aspirants is that constitutional bodies are called constitutional bodies because they are mentioned in the constitution. Now, to be fair, that is a very, very amateur argument, because by that logic, why is the sky blue? Because the blue is sky. In debating, we call it what is called a tautological argument. And we don't want to make tautological arguments. We want to understand exactly why something happens for a specific reason, right? Okay, so let's start. This is our primary question. Why are constitutional bodies called constitutional bodies? So we have to come to this conclusion. Let's understand this through pure maths, through basic derivations. Okay. Now, if I ask you a simple question, which is, what, we'll do this on either sides, what is a judicial body? What is a judicial body? Your basic question would have a simple answer would be, a judicial body is anything which does a judicial function. A judicial body is anything which does a judicial function. Now, what is a judicial function? A judicial function is a combination of two things, which is a question of law or a question of fact. So if you write it more clearly,
A judicial body is any body which performs a function of question of law and question of fact. So, what is a question of law and what is a question of fact? A question of fact is determining the factual circumstances of an incident. Did an event happen? Did an incident happen? Did A kill B? Right? Did A kill B? That is a question of fact. A question of law is that event a violation of the law? Is A killing B a violation of any law? Is it an offense of some sort? Is it prohibited under some law or not? So, we understand that a judicial body is anyone who performs a judicial function which is a question of law or and a question of fact. Anybody who performs both of these functions is called a judicial body. Now, if I divide this equation by 2 on either sides, here also divided by 2 and here also divided by 2, what do we get? Half a judicial body should be performing at least one out of the judicial questions, which is a question of fact or a question of law. And another word for half a judicial body is a quasi judicial body. So, a quasi judicial body is any body which is at least performing a question of fact or a question of law. Right? This is our first understanding. A quasi judicial body is anyone who's performing either a question of fact or a question of law. Now, what if I tell you that all constitutional bodies are actually quasi judicial bodies, but all quasi judicial bodies are not constitutional bodies? If I have to draw a Venn diagram out of it, this would be quasi judicial bodies and this would be constitutional bodies. If you think of it through real life examples, think of any constitutional body. For example, Finance Commission determines the amount of money of a divisible tax pool that has to be shared between the center and the state is a question of fact. The Election Commission decides on outcome disputes, decides on a model code of conduct, decides on nominations and the conduct of elections. That is a question of fact and a question of law. The CAG conducts a post-expenditure audit of any expense that is made by any authority under Article 12. That is in fact a question of fact coupled with a question of law. So the least function that a constitutional body is doing is the fact that it is performing either a question of fact or a question of law. So we can say that constitutional bodies are also quasi-judicial bodies, but all quasi-judicial bodies are not constitutional bodies per se, so to speak. Now, why do we say this? We say this because of rule number 4, which is checks and balances. See, we've got the legislature, the executive, and the judiciary, right? We understand the executive comprises of the permanent executive and the elected executive, right? We also understand that each of them have to keep a check on each other, right? Now, we also understand that the elected executive is a subset of the legislature. So the elected executive, being a subset of the legislature, will have a diminished amount of accountability because of correlational existence. However, when we apply rule number 4 to this, which means the L, E and J should also be keeping a check on one another,
and internally also they should be keeping a check on each other. So within the L, within the E, and within the J. Now, if the elected executive is to keep a check on the permanent executive, it's very easy, because rule number one, democratic mandate, they are the elected office and these guys are the appointed office. But if the permanent executive has to keep a check on the elected executive, that is very difficult, because they're subordinate offices. Their office conditions, their tenures, everything are in control of the elected executive. So, a few of them are chosen to head some institutions which will be given some additional powers. These powers will make sure that they are independent institutions. These powers would be, say, a difficult way to remove them. These powers would mean, for example, uh, protection on reduction in salaries, or office expense, protection from reduction, so that they can evaluate the actions of the elected executive. And once they've been able to do that, as rule number 4, they will be able to assist the legislature in keeping a check on the executive in a better manner. And most of them would run through parliamentary committees, because they are dedicated channels of evaluation. And these institutions that have been created from the permanent executive, given additional power so that they have the courage to evaluate the elected executive better. And these additional powers, because they are at the highest forms, and these highest forms exist in the constitution. These are the branches of the government whose powers are enshrined in the constitution. So these institutions may also have to be given additional powers within the constitution itself, which is why, boys and girls, these are called constitutional bodies. So constitutional bodies are called constitutional bodies because in some manners they are actually performing a check and balance function and an evaluation of the elected executive, and these are nothing but people chosen from the permanent executive, and they are given some additional powers to protect the tenure of their offices, the salaries given to them by the offices, and so on and so forth, to ensure that they are able to keep a check on the parliament. Are we okay with this? Do we understand this? Is this simple enough, clear enough, concise enough? Yes? Sure? So this is why constitutional bodies are called constitutional bodies. Okay? Understood this? Because it's nothing but a function of checks and balances. Because the judiciary often can't get into a lot of functions until there is a law in question, because of rule number 3, separation of powers. If you think about it, constitutional bodies are performing similar checks and balance functions like the judiciary, but are able to get into things that the judiciary can't because of separation of powers. If you have a problem with how the government has been spending money, the judiciary really can't get into it beyond a point, because you're obstructed by separation of powers. But one of the government's own can. One of the government's own can look into it and say, this is where your money has been spent, and we don't think you're spending the money in the right manner. You could have spent the money more appropriately in a more useful manner. Right? Understood this? Yes or no? So, constitutional bodies are called constitutional bodies because they perform
a check and balance function over the elected executive in a manner and scope which isn't possible for the judiciary and therefore present their findings to the legislature directly or through parliamentary committees, है ना? तो इसलिए now that means we are able to see one extreme concept here and of course here and here. This is why we often say that the reports of the constitutional bodies may be presented before the parliament by the president, right? This is why we often see the reports of constitutional bodies presented before the parliament via the president. है ना? Yes? Okay? All right. This means constitutional bodies are performing an intra-check and balance function like the judiciary. Which brings me to the second point, right? India's highest
judicial body would perhaps be the Supreme Court, and India's highest quasi-judicial bodies. These some of them, all of them may not perform a similar function, but some of them definitely do, would certainly be constitutional bodies. So if I combine equations, both of these equations here, so India's highest judicial or quasi-judicial bodies happen to be the Supreme Court or constitutional bodies. Yes, which means both of them are performing a national checks and balance function. If they're performing similar functions, then they also must be given similar kind of features, which is why you will see some constitutional bodies which perform, very similar national check and balance functions are removed in the same manner as a Supreme Court judge, are removed in the same manner as that a Supreme Court judge. ये भी बात सही है. Election Commission is removed in the same manner as a Supreme Court judge, no? CAG is also removed in the same manner as that of a Supreme Court judge. अब समझ में आया? Now, when we study bodies, we follow a standard structure for both the prelims and the mains. Okay, a standard structure for both the prelims and the mains. In the introduction part, you can mention the legal provisions of the body or a specific current affairs incident concerning the body, that the report was being tabled, they had done this, they had done that, a current affairs incident. Okay, and you can give some related data to the sector of the body. Related data to the sector of the body. Related data to the sector of the body मतलब election का है. So you can say that India is the largest democracy and X number of X quantum of X amount of money was discovered very recently in the recent elections, or candidates of X number of political parties had criminal backgrounds, all of those things. So this is your basic introduction. Then your body, and we'll spend some time on the body, is going to have the following headings which will have some points. Your first would be mandate. First heading would be mandate. Second would be composition. Third would be functions. And fourth would be
special powers. Each of these are going to have some subpoints, but largely this. And then your conclusion should be the importance of the sector or the body for the country. ठीक है? This is your standard broad structure. I'll give you 1 minute to take a note of this, and then we will magnify this and get into the details of this structure. No, sir, that's fine. Yes. No, CAG is removed in the same manner as that of a Supreme Court judge. What was O in the classification? Oversight. ठीक है? Now, let's spend some time. Let's spend some time on the overall functionality. Okay? Let's spend some time. We are now looking at the core body. बहुत ध्यान से देखना. The core body is going to have a total of four headings. Okay? Mandate, composition, functions, and special powers. Each of these four headings are going to have some subheadings. Okay? 1.1, they are the same. What is the mandate? 2.1, how are they appointed? Most bodies are appointed only. Let us say if some are elected, you can write elected also. Third, what are the functions?
And fourth, what are some special provisions? ठीक है. The second heading are the problems with the mandate, the problems with the composition, the problems with the functions, and the problems with the special provisions. The problems with the special provisions. And third would be solutions. Okay. In a 10 marker, you can write the solutions under the headings itself, or in a 12 and a half marker, you can write the solutions as a part of the conclusion itself, right? That choice, of course, I'm giving you. Now you see, very simple, 1.1, 2.1, 3.1 and 4.1 is primarily for the prelims. 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3 and so on and so forth. These parts, this part is for the means. ठीक है? And this part is prelims. Now comes the fun part. No matter what the authority is, usually the basic problems are the same. Like for example, with mandate, the problems would be that the mandate is either vague, or it is undefined, or it is ambiguous, or it is under ambitious, or it is over ambitious. इसमें से कुछ ना कुछ तो पक्का ही लगेगा, ठीक है? If it is an appointed body, there might be a qualification issue, there might be an appointment or a merit bias कि qualifications defined नहीं है, merit defined नहीं है, process opaque है, कुछ इसमें से कुछ ना कुछ तो पक्का ही लगेगा. There will be some form of a qualification bias. If the body is an elected body, then there will always be a representation bias. That is, certain set of people are given more preferences to be elected than anybody else. आप दुनिया की कोई भी बॉडी उठा लो, उसमें तीन चीजें लगती हैं, तीन बेसिक प्रॉब्लम्स. Either they are overburdened, or they are overlapping with another authority, okay, or they are outdated in their functions. Correct? बस. और स्पेशल पावर्स जो आप किसी को कुछ एक्स्ट्रा देते हो, उसमें हमेशा एक इशू रहता है, that they can sometimes be discretionary, and because of this they become, there's a lack of accountability in their body. The lack of accountability in their body. Clear?
तो योर प्रॉब्लम्स आर द सेम, प्रॉब्लम्स आर द सेम, चाहे कुछ भी कर लो. एंड वेरी ऑफन द solutions are also the same, that have more clarity in the law. The law needs to be more precise. There should be more very clear conditions of appointment or removal. There should be public disclosure or clarity in terms of your criteria. अब ओवरबर्डनिंग का प्रॉब्लम है तो फंक्शंस कम करके स्टार्ट डेलीगेटिंग. ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम है तो फिर हैव अ क्लियर डिवीजन ऑफ फंक्शन की इतना ही करेंगे इतना नहीं करेंगे. और आउटडेटेड का प्रॉब्लम है तो लॉज अपडेट करो जहाँ से पावर आती है. और अगर अकाउंटेबिलिटी का इशू है देन एटलीस्ट हैव सम रिड्रेसल और ग्रीवेंस मैकेनिज्म. यही है ना? यस और नो? बस. अब कुछ भी उठा लो दुनिया में, CAG, ECI, फाइनेंस कमीशन, GST काउंसिल, NHRC, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल बॉडीज उठा लो, UN सिक्योरिटी काउंसिल, WTO, कुछ भी उठा लो, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा. CBI, CBC, लोकपाल, कुछ भी उठा लो, बस इतना ही है. यस. कुछ भी उठा लो. आर वी क्लियर? किसी भी बॉडी के बेसिक सॉल्यूशंस वही होते हैं कि भाई आपका लॉ प्रिसाइज होना चाहिए कि आपका काम क्या है. अगर आपके में कहीं बायस है तो भाई क्लैरिटी लाओ, लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दो लॉ बना के, डिस्क्लोजर लॉज. अगर ओवरबर्डन हो रहा है तो भाई काम दूसरों को डेलीगेट कर दो. ओवरलैप हो रहा है तो डिवीजन ऑफ फंक्शन होना चाहिए. अगर आपका आउटडेटेड फंक्शन है तो भाई आपके लॉज अपडेट करो जैसे दे कैन डू व्हाट आर मोर कंटेम्प्रेरी रेलिवेंट. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इशू है डिस्क्रेशनरी तो भाई रिड्रेसल में मोड पर चले जाओ. एक डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए. Are we clear with this? थैंक यू निधि. हाँ, वो थोड़ा सा जितना चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड रखोगे ना उतना आसान है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज एक एक बॉडी का इसी स्ट्रक्चर में नोट्स होने चाहिए, इस एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर में. पहली लाइन प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, दूसरी लाइन मेंस के लिए हो गई. अब न्यूज़पेपर में कुछ भी आता है, इसी में कुछ आता है
कुछ नया आर्ग्यूमेंट आया, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, कुछ नया सोल्यूशन बताया, यहाँ ऐड कर दिया. And whichever has the most amount of additions in a year, that body automatically becomes important for the exam. अब तो बस fill in the blanks है, अब तो बस fill in the blanks है. इसके बाद तो बहुत आसान है, इससे ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक नहीं है. ऐसा क्यों किया, 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 ये ऐसे कर दिया. यस शिवानी. ठीक है, अंडरस्टूड, डन. एक बार इसको फाइनल कर लीजिए. यू कैन टेक अ 5 मिनट ब्रेक. अब हम एक तरफ से विल स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. यू कैन टेक अ 5 मिनट ब्रेक नाउ.
Thank you, Shivani. Thank you, Syed. It'll always be an honor. It is the greatest honor of my life, honestly, to be able to do what I'm slightly able to do. चलिए, अब ठक 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 एक तरफ से शुरू करते हैं, ठीक है? So, let us start with the ones which are, we're going to do say financial together, then non-financial together and ancillary together. ठीक है, तो एक तरह से शुरू करते हैं. So let us start with, let's say, the basics of our electoral body, which is, मैं इलेक्शन कमीशन वगैरह डिटेल में कराऊंगा, बट बेसिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आई एम कवरिंग द फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट 1.1, and then we'll get into the mains part in a while. So, Election Commission of India. What is the mandate? To conduct presidential, vice presidential, Lok Sabha, Assembly, Rajya Sabha, state legislative councils, all these forms of elections, right? Of course, apart from that, election management, clear? And election management and disputes arising out of election management are directly with the election commission. Disputes with respect to the outcome of an election, they are with the high court. अगर आपको वोटिंग लिस्ट या बूथ मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से प्रॉब्लम है, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाएंगे. लेकिन आपको काउंटिंग ऑफ वोट्स, इलेक्शन रिजल्ट से प्रॉब्लम है, देन आप हाई कोर्ट जाएंगे, राइट? Now, how and what? When we talk about the composition, in India we have one chief election commissioner and two election commissioners. One chief election commissioner and two election commissioners. अब पहले कम थे, अब हमने बढ़ा दिए हैं. They are appointed by the president for a total of 6 years, or the retirement is 65 years, whichever is earlier. Why 6 years? Because you get one additional year from the maximum tenure of the lower houses, जो आपका 5 साल का होता है, ताकि इलेक्शन ईयर में बॉडी चेंज ना हो, and you are able to conduct the elections rather smoothly. Okay, are able to conduct the elections rather smoothly. ठीक है? Okay. अब ये सिंपल समझ में आया, ये क्लियर हुआ, राइट? All election commissioners have equal powers. The chief election commissioner has a टाइम वोट पावर. अगर टाई हो गया है तो ओवर रूल कर देता है. ठीक है? क्लियर ऑन दिस? यस. नाउ रिमूवल. चीफ इलेक्शन कमिश्नर, simple, in the same manner as a Supreme Court judge. So you require special majority 2. Other election commissioners, how do they get removed? They get removed only after CEC initiation. मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक नहीं बोलेगा तब तक आप बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव नहीं कर सकते. एक बार हो गया, एक बार CEC ने बोल दिया हाँ हाँ इसको निकालना चाहिए, देन यू कैन हैव स्पेशल majority 2. Then you can have special majority 2. ठीक है? Clear? पक्का? After your retirement, they can be reappointed, which is why
देयर आर ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना? ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है फंक्शंस करने का जो हम बता रहे थे, विच इज ऑल इलेक्शंस एक्सेप्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड यूनियन इलेक्शंस, जो लोकल यूनियन, ट्रेड यूनियन तरह के इलेक्शंस होते हैं, उनको छोड़ दो। उनको छोड़ के अलावा all other elections are to be conducted and managed by the election commission. Okay, understood this? Yes, their special powers is that they can issue what is called a model code of conduct, which we will discuss in detail in election reforms, but this is broadly how your electoral code of conduct or what is allowed and what is not allowed यहाँ पे होता है, ठीक है? सो जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो पार्टी सिंबल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज, नॉमिनेशंस, इलेक्शन मैनेजमेंट, वो सब कुछ इसमें आता है। बस अगर प्री में इलेक्शन कमीशन से कुछ आएगा तो इतना ही आएगा, इसके ऊपर एक भी लाइन नहीं आएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? Is this fine? Is this okay? Yes? All right? Okay. Now I'm give you 1 minute to take a note of this. Then I'll move to UPSC and State Public Service Commission. अरे शिवानी बेटा, LSG is local self government, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, ऑल राइट। Now we move to यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ एक्साइटेड नहीं होना है ज़्यादा, जितना काम का है उतना ही करना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। मैंडेट, रिक्रूटमेंट और एडवाइजरी फॉर सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना? और इनका क्या है? रिक्रूटमेंट एंड एडवाइजरी फॉर स्टेट सर्विसेज। बेसिक अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है? देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 11 members to the UPSC. Currently there are 10 members. Okay, and they're appointed again by the president
for 6 years or 65 years, whichever is earlier. Whichever is earlier. ओके देखो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हिसाब से. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्ट्रेंथ मैक्सिमम मेंशन नहीं है. जस्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years और 62 years, ताकि यहाँ से आप यहाँ आ सको. विच एवर इज अर्लियर, है ना. 62 65 इज द केस फॉर एवरी सेंटर स्टेट बॉडी. ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड दिस. यस. रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट पोस्ट अ बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी. ठीक है, similarly, exactly the same. Now, why do we do this? Because at the end of the day, these are recruitment agencies. अब recruitment ही agency है, and if you're looking at removing them in the manner of the Supreme Court judge, तो obviously the Parliament may have or may not have a grudge, which is why you keep the third party involved, because here it is the same recruiters who end up then becoming constitutional bodies, so additional protection has to be given. That is why by the president only. ठीक है, by the president. In fact, what is very interesting to notice, in UPSC and state public, both case, the removal is by the president, whereas the appointment can be by the president and the governor respectively. बस, और इसके ऊपर आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. The only difference here is that their recruitment qualifications are also extremely similar. कि मतलब at least half of the members should have 10 years of public service as an experience. 10 years of public service experience, at least half of these members, which is true for here also and here also, which is why you'll see a lot of the bureaucrats end up becoming UPSC members. बाकी में कई बार प्रोफेसर्स वगैरह भी होते हैं. ठीक है, क्लियर, ऑल राइट. नाउ functions, central services, foreign service, revenue service, audit and account service, etc. का recruitment, all India service, IAS, IPS, forest services, defense services से का written stage का recruitment. Apart from that, some medical officers for the center, etc. And in case a civil servant has to be removed, then they can advise on disciplinary matters. They can advise on disciplinary matters. ठीक है, यहाँ पे they also advise on disciplinary matters, but they only recruit for state services. They only recruit for state services. ठीक है, just state services. And what is special powers here? The special powers here are that they can also advise on corruption and conduct related matters. Corruption and conduct related matters. ठीक है,
You can take 1.5 minutes. Defense. Defense is written below all India services. All right. All right. We now move to the next bodies. चलिए, आप कोई भी उठा लो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी विच वाज अ रिसेंटली एडेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, कोई भी उठा लो, सबका बेसिक इज द सेम. ओके, no, not really, Nishant, because formally it is done by the Cabinet Committee of Appointments. They can consult with the UPSC if they want to. वो एक बार सीनियोरिटी अगर चेक करना हो तो यूपीएससी से कंसल्ट कर सकते हैं, बट द डिसीजन इज नॉट विद द यूपीएससी. ओके, चलो, सिंपल मैंडेट क्या है? वेलफेयर फॉर दीज वल्नरेबल sections. Welfare for these vulnerable sections. All of them are appointed by the president और इनमें से किसी का भी रिमूवल मेंशन नहीं है, राइट? द रिमूवल प्रोसेस फॉर एनी ऑफ देम इज नॉट मेंशन्ड. और सिंपल है. अब इसमें आप लिंग्विस्टिक्स भी ऐड कर दोगे, द नेशनल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज प्रमोशन वगैरह, सेम, सबका बेसिक काम यही है, प्रमोशन
and welfare and redressal, as well as any form of inquiry on matters pertaining to SC, ST, OBC और लैंग्वेजेस पर से। बस प्री में इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, बस इतना बहुत है। ठीक है, जब बॉडी ही इतनी बेसिक है तो आप मतलब द बेसिक थिंग्स दैट दे कैन डू in terms of special powers is that they can recommend some policy changes, some policy advice, some legal advice to the government for making better laws। बस और कुछ नहीं, इतना ही है बस। See, this is it. This is all that there is. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वकीलों पे आते हैं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब ठीक है। सो अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। Solicitor General is basically an advisor to the government of India, legal advisor, but primarily you have to look at Attorney General and Advocate General। ठीक है, बहुत लॉजिकली सोचो। Attorney General is government's lawyer, central government's lawyer। Advocate General is state government's highest lawyer। सेंटर वर्सेस स्टेट्स होगा तो अटॉर्नी जनरल वर्सेस एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, बेसिक। अब यार ऑब्वियस सी बात है, सरकारी वकील हो, सरकारी वकील को किस चीज का प्रोटेक्शन? जब तक काम करोगे करोगे, नहीं करोगे नहीं करोगे। सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हियर, यहाँ गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सिमिलरली रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट हियर, रिमूव्ड बाय द गवर्नर। करेक्ट, कोई इशू ही नहीं है इसमें। ठीक है, एंड इट इज नथिंग बट गिविंग एडवाइस एंड रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, एंड हियर एडवाइस एंड रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट, सो स्टेट ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल। स्पेशल क्या है? टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द सेम एज दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज।
अगर सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक हो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू करने के लायक हो, बिकॉज सेंटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. Similarly, eligibility criteria similar as that of a Supreme Court judge. ठीक है. Now they are supposed to represent the policies and laws of the government in case they get challenged in the court. So sometimes their legal views are necessary. So they can participate, but not vote in the parliament because of rule number 1, they are appointed bodies, not elected bodies. Similarly, they can participate but not vote in the state legislatures, again because they are appointed and not elected. Bas. And they can have other cases privately, they can have their own legal cases as long as it's not conflicting with the government. You can't be arguing against the government in your private capacity. ठीक है, clear. They can have other cases also, no issues at all. Yes. बस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. इसके इन शब्दों पे मत जाइए, बिकॉज दीज वर्ड्स मीन द सेम. इट इज़ अ डिफरेंशिएशन फॉर सेंटर एंड स्टेट. इसका मतलब अटॉर्नी और एडवोकेट में ये फ़र्क नहीं है, बस इंस्टीट्यूशन के डिफरेंशिएशन के लिए ऐसा किया है. ठीक है. नाउ we look at all the financial bodies together, financial constitutional bodies together. हमने फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन सेंटर स्टेट में ऑलरेडी कर लिए थे. वी जस्ट हैव टू लुक एट द ब्रॉड फाइनेंशियल बॉडीज टुगेदर. ठीक है. CAG, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, और नया GST काउंसिल. यू विल सी GST काउंसिल एंड CAG इन द न्यूज़ द मोस्ट. ठीक है. FCI तो साल में एक बार. FCI ओनली, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ओनली UPSC चिल्ड्रन नो. CAG GST काउंसिल मोस्ट पीपल वुड who read the newspapers would know. ठीक है. चलो. CAG basic is your apex auditor. Finance Commission of India is recommending tax distribution between the center and the states, and GST Council is to regulate GST rates and implementation. बस. अब करते क्या है क्या नहीं करते, we'll get into the details. Similar, appointed by the president for 6 years or 65 years, whichever is earlier. ठीक है. Understood. Similarly, Finance Commission appointed by the president for 6 years or 65 years, whichever is earlier. But GST Council is not elected. No. Advocate General is not elected.
कौन बोला एडवोकेट जनरल इज इलेक्टेड बाय हाई कोर्ट जज? नो नो नो, नॉट एट ऑल. No. See, an advocate general, an attorney general should have the same qualifications as the judge of a Supreme Court, and an attorney general should have the same qualifications as should be fit or should be eligible to be appointed as a high court judge. ठीक है. GST Council comprises of the Finance Minister and the Finance Minister of India and the Finance Minister of all states. तो इसमें कोई appointment वाला concept ही नहीं है. It is in fact an elected constitutional body, one of the very few constitutional bodies which are actually elected. In fact, the only constitutional body which is elected, if you think about it. Okay. Now CAG performs an advanced check and balance function. Special majority 2, like a Supreme Court judge. कितना पैसा खर्च किया वो बता रहे हैं ना, इसलिए. ठीक है. Yes. Now, in terms of the Finance Commission, you usually have a chairperson and 4 other members. You have a chairperson and 4 other members. Usually what happens is that the chair is a public affairs expert or a public office or a public admin expert, and then you have member 1, member 2, member 3, member 4. सोचो, if the work is tax related, then what will it be? First, a person who's eligible to become a high court judge, because tax distribution का मामला है, it has to be within the center state ramifications. Second, tax का issue है, so a government finance expert, a government finance expert. Third, a generalist, so that you know it, you're not making a purely financial decision but looking at all the ramifications of taxes. And fourth, an economic expert. श्रीकांत, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल को आपको अपने आप निकालना पड़ता है. नई गवर्नमेंट आएगी तो वो नया अपॉइंट करेगी. गवर्नमेंट के रिजाइन होने से ऑटोमेटिकली नहीं जाते वो. ठीक है, राइट? सो दिस इज द बॉडी. नाउ हाउ डू यू रिमूव देम? You remove them directly by the president, and whenever we say the president, it's always president on advice of the council of ministers. वही सेम चीज़ है, फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी, मेंटल incapacity or a deficiency of mental issue, or for some moral reasons. ये कुछ भी डिफाइंड नहीं है, बस इतना ही लिखा है. ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है ना, इसलिए. ठीक है. अब ऑब्वियसली मिनिस्टर तभी निकलेंगे जब नो कॉन्फिडेंस होगा या कैबिनेट रिशफल होगा, तो दिस डज नॉट अप्लाई हियर. बेसिक फंक्शंस ऑफ CAG इज टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ एनीथिंग व्हिच कम्स अंडर द स्टेट अंडर आर्टिकल 12. कुछ भी, लाइफ इंश्योरेंस से लेके प्रीवियसली एयर इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सब कुछ इज द सेम, राइट? ओके. बेसिक ऑडिट फंक्शंस. एंड sends report to the public accounts committee, which then studies the report, and of course their reports are also tabled in the parliament through the president. अब इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें they do a regulatory audit कि हाँ भाई LIC बताओ कितना पैसा खर्च किया, कितना नहीं किया. They sometimes do a policy audit कि भाई MG नरेगा में आपको रोड बनानी चाहिए थी, पुल नहीं या ब्रिज नहीं. ठीक है. Then a proprietary audit. A proprietary audit is these are the new things that you should have done but you haven't done.
अब पॉलिसी ऑडिट करते हो तो भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स का तो इशू है ही है. योर जॉब इज टू बी एन अकाउंटेंट, नॉट डिसाइड पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट. सो दिस इज ऑफ कोर्स a source of concern for everybody. Finance Commission we've already studied. This is nothing but the distribution of of divisible tax between the center and the states, measures for local government finance strengthening, and any other matter of financial policy. जीएसटी काउंसिल का क्या है भाई? जीएसटी रेट्स डिसाइड करते हैं, कॉम्पनसेशन का देखते हैं, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड देखते हैं, राइट? ये काम करते हैं, राइट? क्लियर ऑन दिस? ओके. And because it's ultimately an elected body, for all decisions you require a 3/4 majority because center state. It's an application of 368. That is why. ठीक है, बस. क्लियर? दीज आर योर बेसिक बॉडीज. अब इसमें तुम डिटेल में जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. क्वेश्चंस इसी में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. You can take a minute, copy this. We'll do some PYQs after this. M3 is member 3, has 4 members, no? Member 1, member 2, member 3, member 4. 3/4 total majority of the 3/4. परसेंटेज तो उतनी हुई ना एकांश भाई. इसी का बताया ना, बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी लगता है. रेगुलेटरी ऑडिट इज एन ऑडिट अंडर द लॉ, CAG रूल्स ऑफ 1971. ओके.
नाउ अब देखो, सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से we will be able to solve almost every previous year question there is as far as bodies are concerned. Tenure for finance commission is 5 years. 5 years because it's a recommendatory body to the government. गवर्नमेंट को बताती है ना कि इतने सालों में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए. 5 years. Ex officio, yes, absolutely, Nishant. Fantastic correlation, very good. Sudarshan Kumar, yes, 5 years. चलिए, for the last 3 years there have been no questions whatsoever from bodies. For the last 3 years ये बॉडीज किस फाइल में है? ओपन ड्राइव के पहले ही फोल्डर में. ठीक है. नाउ for the last 3 years there have been no questions on bodies. Let us hope they break the chain this year because 3 साल बहुत ज़्यादा होता है. So 2022 में बॉडीज का क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा लाइकली है. इतना पड़ा है, इससे देखते हैं कितने सवाल सॉल्व होते हैं, कितने नहीं होते हैं. What are the bodies that come beyond the constitution and so on and so forth. ठीक है, चलिए शुरू करें. ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन. बॉडीज के क्वेश्चंस में आंसर क्वेश्चन में होता है हाउ इज द एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. अब किसको याद रहता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में क्या है, व्हाट इज मेंशन, व्हाट इज नॉट मेंशन. द एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, ये तो बात सही है. वेयर एज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. अब इसमें हम श्योर नहीं हो सकते हैं, इतना रट के कहाँ से जाएंगे, इतना कहाँ से याद रहेगा. नाउ लेट अस सी. The NGT provides for environmental justice and helps reduce the burden of litigation in higher courts. ये तो सही है. Whereas the Central Pollution Control Board promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. Right? Aims to promote the quality of air in a country. यही हुआ ना? Yes? Yes or no? Correct? Yes or no? इसको अब आज की डेट में अप्लाई करके देखो. जस्ट अप्लाई दिस क्वेश्चन हियर. Was there a pollution lockdown in the country? दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से लॉकडाउन था या नहीं था? Were schools shut or not? Or colleges, and were they not shut because of air pollution? Were schools shut or not because of air pollution? इतना बता दो. आई एम अज्यूमिंग मुझे नहीं आता सीपीसीसी क्या है. इतना तो आता है दैट स्कूल्स वर शट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. लॉकडाउन इज एन ऑर्डर विच मीन्स you are shutting down institutions, schools and colleges, right? अगर आप लॉकडाउन कर सकते हो, if you can shut down schools and colleges,
then the authority giving that order must also have a backing of a law, must also have a backing of a law. Yes or no? अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं होगी तो फिर वो कैसे डायरेक्शन देंगे कि भाई आपका पीयूसी इतने साल का होना चाहिए, आपकी इतनी पुरानी गाड़ी में इतना फ्रीक्वेंटली चेक होना चाहिए? नहीं कर सकते ना, बिकॉज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन ऑल्सो रेगुलेट योर व्हीक्यूलर ट्रैफिक, कि भाई इस तरह की गाड़ी चलेगी, इस तरह की नहीं चलेगी, सीएनजी में ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, उसमें रोल तो होता है. यू आर रेगुलेटिंग व्हीक्यूलर मूवमेंट. कैन यू रेगुलेट व्हीक्यूलर मूवमेंट विदाउट द इफेक्ट ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ कहाँ गया? सो यार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो शायद नहीं होगा, विच मीन्स ओनली 2 इज करेक्ट. समझ में आया? यस, आर वी क्लियर विद दिस? मेरे को नहीं, जेन्युइनली if I had forgotten it is not, it's actually through a law, I would have still been able to deduce the question. And that is something you have to learn. There will be questions which will throw you off your game. Apply the question to a real time scenario. See why and how are things functioning around you. Understood? Clear? Okay? Good. The answer should be B. बस चेक कर लेते हैं यार. हाँ यार बी है. चलो, consider the following statements. The Election Commission of India is a 5-member body. The Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. The Election Commission resolves the disputes relating to the splits and mergers of recognized political parties. Resolves the disputes of splits and mergers of recognized political parties. ठीक है, अब ध्यान देते हैं, एलिमिनेट करना शुरू करते हैं. If we see what is the one common option available? The one common option available across all of them, अगर हम 2 eliminate कर देते हैं, then we are able to eliminate 1, 2, A, B and C. So let's look at option number 2. Union Ministry of Home Affairs, MHA बेटा decide करेगा election कब होगा. If MHA starts to decide when the election is going to happen, फिर तो गया आपका independence of elections. ये तो हो ही नहीं सकता, right? This cannot be the case. Right? So 2 is obviously the wrong option. जहां 2 eliminate करो, क्या बचा? 3. Election Commission is never a 5-member body, it's a 3-member body. 1 भी गलत है, right? Yes. इलेक्शन, मैंने क्या बोला था? डिस्प्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट, स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लिखा है. यहां लेजिस्लेचर के अंदर वाला स्प्लिट नहीं है, विच वुड बी कवर्ड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट? विच वुड बी कवर्ड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट? If elected MPs और MLAs are joining a political party, तो वाला इशू है ना. और एंटी डिफेक्शन लॉ में पहली बात स्प्लिट तो अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ मर्जर ही अवेलेबल है आफ्टर द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो वी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट द स्पीकर एंड एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. Do you understand why? Because of rule number 3, separation of powers, this is the incorrect option. ये हमको फैक्चुअली पता है 3-member बॉडी है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. आर यू एबल टू डिड्यूस, आर यू एबल टू एलिमिनेट एंड से हाँ ये आंसर क्यों है? बिकॉज देर इज नो वे यू कैन रिमेंबर सो मेनी टेक्निकल डिटेल्स ऑफ इलेक्शन लॉज, बट यू कैन डेफिनेटली एलिमिनेट बाय बेसिक्स. मैंने क्या बोला था? इलेक्शन मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स आर विद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन आउटकम डिस्प्यूट्स आर विद हाई कोर्ट.
ये समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? ठीक है, क्लियर? चलिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, बहुत मुश्किल क्वेश्चन। हैज इस्टेब्लिश द नीति आयोग टू रिप्लेस व्हाट? प्लानिंग कमीशन। इसमें मैं आपका समय भी नहीं बर्बाद करूंगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देख लो कितने पुराने क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम पे ही अबॉलिश हो रहे थे। These are all getting abolished. NDC was getting abolished around that same time. ठीक है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, एनडीसी नहीं है, इंटर स्टेट काउंसिल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, एंड zonal councils are also not. 1, 2 and 3. Yes, yes, Nishant, absolutely. Split of LGP. Yes, 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 absolutely. हाँ, बीजेपी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना था. प्लानिंग कमीशन तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है. An executive body can never be mentioned in the constitution. We've discussed NDC and zonal councils on a reference basis in center state as solutions कि इनको बेहतर करना चाहिए. Which of the following statements are true with respect to Attorney General? Can take part in the proceedings of the House, can be a member of the committee of the Lok Sabha, can speak in the Lok Sabha, can vote in the Lok Sabha. भाई जब member rule number 1 only elected, not it's elected bodies versus appointed bodies. Attorney General is appointed, is not elect. भाई elected नहीं हो तो vote नहीं कर सकते, तो 4 हटा दो. पार्टिसिपेट और स्पीक का मतलब तो एक ही होता है, येस और नो. एंड कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी और नॉट, ये बताओ. यस, यू कैन बी अ मेंबर, यू कैन टेक पार्ट एंड यू कैन स्पीक. वोट कर, पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑल्सो आर नॉट वोटिंग. देखो 1 and 3 तो सही है ना, तो फिर 2 ऑटोमेटिकली सही हुआ, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा. How else will you take part in the proceedings if you don't speak on the floor of the house, right? So yes, so 1 and 3 सही है, तो 2 by extension सही है. So your answer is 5C. D गलत होगा भाई. 5C. 1 and 3 is 100% correct. The only option which has 1 and 3, yes, sorry, 1 and 3, sorry, 1 and 3, I misread this option, sorry, 1 and 3, yes, 1 and 3, sorry, 1 and 3, yes, yes, 1 and 3, sorry, yes, 1 and 3, 1 and 3. To be a member of the committee, you have to be a member of the, a committee has to be an MP wala committee, correct, sorry, my bad. Now 2013, which of the following was constitute the NDC? Because 2014 आते आते वो NDC को खत्म कर दिया था, और it had become a redundant body, which is why there were so many questions on NDC. ठीक है, चलिए. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
कोई सर पैर नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शंस, मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, राइट? नाउ chairman finance commission is the only person who is an appointed authority. An appointed authority cannot have the same status as an elected authority in a body. It would violate rule number 1. It would violate rule number 1. Yes. And therefore you eliminate very easily chairperson of finance commission and you get 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. चलिए again 2013 same question. NDC is an organ of the planning commission. Economic and social planning is kept in the concurrent list of the country of the constitution. The constitution of India prescribes that panchayat should be assigned the preparation of plans for economic development and social justice. ठीक है, सबसे पहले देखो एलिमिनेट क्या कर सकता है. अगर 1 एलिमिनेट कर सकते हैं, इट इज इन 3 out of the 4 options, either 1 or 3. So let's see if you can eliminate 1 or 3, which is easier to eliminate. That planning commission के अंडर आएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. प्लानिंग कमीशन which is an executive body does not have any minister except the PM who is the ex officio head. बाकी सब lateral entry होते हैं. उसके अंडर PM, CM और कैबिनेट आएगा. कि मतलब अपॉइंटेड अथॉरिटी के अंडर आएगा इलेक्टेड अथॉरिटी. तो ये तो नहीं हो सकता. 1 भी किसी हालत में नहीं हो सकता. एलिमिनेट 1, यू आर लेफ्ट विद B, 2 and 3. ठीक है, शुड बी 1 तो हो ही नहीं सकता. एनडीसी कैन नॉट बी एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. अब तो प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन ही बहुत रिडंडेंट हो गया है. चलो, डिलिमिटेशन चल रहा है ना आजकल. हमने पार्लियामेंट के टाइम पे पढ़ा था. The orders of the delimitation commission cannot be challenged in a court of law. Separation of powers. When the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or the Assembly, they cannot effect any modifications in the orders. They cannot effect any modifications in the orders. Rule number 3. Separation of powers. If the judiciary would get into, what does the delimitation commission do? Redraw constituencies. If the judiciary could get into the redrawing of constituencies, and elections have not even happened, you're just drawing the battleground where election can happen. It's a violation of separation of powers. Absolutely correct option. It can't be challenged in a court of law. Second, when the orders are laid before, if the parliament or the legislature, एक तो पहली बात फंस गए यहाँ पे, ये ही बहुत क्लियर वर्ड है. Elections in the country happen centrally. Elections to the center and the states happen centrally. स्टेट्स का कोई रोल ही नहीं होता है. अगर स्टेट का कोई रोल ही नहीं होता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछोगे कैसे? सो डन, बोथ आर करेक्ट. अदरवाइज ऑल्सो इफ द पार्लियामेंट कुड गेट इनटू दिस, इट कुड बी एन ऑल्टरेशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो फिर वो अपने हिसाब से अपनी मेजॉरिटी बना देते ना, रीड्रॉ करके कॉन्स्टिट्यूएंसी. And if the parliament could get into it, then the Rajya Sabha would get into it. Rajya Sabha is a representative of the states. See. चलो.
In India, other than ensuring public funds are used efficiently for intended purpose, what is the importance of the office of the CAG? ठीक है, ऑप्शंस देख के चलना. CAG exercises control on behalf of the parliament when the president of India declares national emergency, presidential emergency, financial emergency. अच्छा, exchequer. CAG reports on the execution of projects or programs. Remember, CAG stands for Comptroller and Auditor. इंडिया में कंट्रोलर का कोई मतलब नहीं है, यूके में है कि खर्चा करने से पहले यूके के सीएजी का पूछना पड़ता है. हमारे यहाँ नहीं है बिकॉज ऑफ रूल नंबर 1, डेमोक्रेटिक मैंडेट. CAG reports on the execution of programs or projects by the ministries, and these reports are discussed by the Public Accounts Committee. Information from CAG can be used by investigating agencies. While dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law. ठीक है, इसको इतने आराम से एलिमिनेट कर सकते हो. If the CAG is exercising exchequer control, मतलब अगर इमरजेंसी है तो पैसा CAG ऑथराइज करेगा. भाई इमरजेंसी पे तो पार्लियामेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. So the parliament has not gone anywhere. And rule number 1 भाई, elected over appointed at any day, incorrect option. इसी से आप पूरा का पूरा 2 चीजें आप एलिमिनेट कर सकते हो. Anyways, CAG reports are discussed by Public Accounts Committee. सही है. Information from CAG reports can be used by investigating agencies. 2012, 2G, Colgate scam, ये सब CAG reports थी. Yes, there you go. While dealing with audit and account of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those. CAG is not a full judicial body, no, it's a quasi-judicial body. It only recommends actions. All bodies are recommendatory in nature because elected over appointed. तो if they तो recommend कैसे करोगे prosecute करना? या तो जेल भेजोगे या तो नहीं भेजोगे. Recommend थोड़ी ना करोगे. तो 4 is also incorrect. Yes. तो बचा क्या? 2 and 3. Yes. समझ में आ रहा है? ठीक है. All right. चलो. With reference to Finance Commission, which of the following statements is correct? It encourages the inflow of foreign capital, facilitates proper distribution of finances in public undertakings. It ensures transparency in financial administration. And in the context of this ABC, in the statements given ABC, none of the above are correct. फाइनेंस कमीशन तो टैक्सेस के लिए है, बात खत्म. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर ये बताएगी तो सरकार क्या करेगा? ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इनका काम थोड़ी ना है. पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑडिट अकाउंट्स करेंगे. ऑल द 3 आर इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है.
क्लियर ऑन दिस? अंडरस्टूड? पक्का? गुड. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से. इम्पॉर्टेंट डिलीवरेबल्स फ्रॉम माई एंड, इम्पॉर्टेंट डिलीवरेबल्स फ्रॉम माई एंड, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? एंड टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद, आई विल हेल्प यू विद, ठीक है? बहुत ध्यान से. सबसे पहला, नाउ दैट आवर कोर्स इज कमिंग टू एन एंड, आपके पास बहुत सारी पीपीटीज हैं, बहुत सारे नोट्स हैं. व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू अ वर्ड बेस्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ठीक है? अ वर्ड बेस्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट within the next 3 to 4 days and share the same with you over the drive, and will also ask the institute to keep a print copy of the same available with them. ठीक है? ये क्लियर है? पहला. दूसरा, जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं जैसे बॉडीज वगैरह, इन सबको इसमें इंक्लूड करके I'll give you 2-pager notes integrated in this word-based document on every topic or issue, right? As far as polity is concerned. 3, I will make a full syllabus map, है ना? कि मेन सिलेबस 1 सब टॉपिक 1.1 ये कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है? आई विल अपडेट द इसेंशियल रीडिंग लिस्ट ऑफ लक्ष्मीकांत, जिससे आप नेक्स्ट आईएएस की बुक भी क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो, दोनों में से एक पढ़नी है, ठीक है? मेंस के पहले इन सब में जितना भी अपडेट होना है, पेज बाय पेज जो भी अपडेट होगा, मैं एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बना के दूंगा जिसमें आपका डेटा, जजमेंट्स, एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी जो ऐड करने हो, इश्यूज कुछ अगर नए आ जाते हैं तो वो कवर करेंगे, ठीक है? ये क्लियर है? ये फर्स्ट सेट ऑफ डिलीवरेबल्स है. सेकंड, अ लॉट ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर गवर्नेंस, जिसमें आपके बाकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज और ये आरटीआई वारटीआई इलेक्शन वगैरह, वो सब जो आपको some of these topics have been told have been covered for you, but governance का पूरा कोर्स by February itself, ठीक है, मैं YouTube पे डाल दूंगा, प्लस ए फुल कोर्स ऑन एथिक्स. आप उसको आराम से देख सकते हैं विद डेडिकेटेड नोट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? अंडरस्टूड दिस? श्योर? Yes? Clear? This is the second set of deliverables. Third, prelims के लिए I always release a final lap. क्या है उसमें? Important schemes, reports, organizations, environment developments, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स, ये सब कुछ, ऑल ऑफ दिस, ठीक है? प्लस योर करंट अफेयर्स कंपाइलेशन जो मैं आपको हर मंथ देता हूँ, वो आपको मिलता रहेगा. आई ऑल्सो रन ए फ्री मंथली जीएस टेस्ट, काफ़ी महीनों से चला रहा हूँ, अब आप कर सकते हैं, अभी आपकी कोर्सेज ख़त्म हो रही है, ठीक है? यस, श्योर? ये सब कुछ आपको मेरी तरफ से एडिशनली मिल जाएगा, ठीक है? पूरा सामान, आईआर हॉटस्पॉट्स, जितना कुछ, जो कुछ, ठीक है? डेली करंट अफेयर्स की शॉर्ट लिस्टिंग अभी मैंने शुरू कर दी है,
राइट. सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड, मंथली कंपाइलेशन, वो सब कुछ आपको. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू watch the prelims final, the 2022 plan video that I had made. The tests I sit down and make them every month are actually not bad tests. आप उनको ट्राई कर सकते हो. यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग दम लाइव. मैं PDF ऐसे भी वेबसाइट पे अपलोड कर ही देता हूँ. ठीक है. ये 3 चीज़ें कन्फर्म्ड मेरी तरफ से आपको 100%. ठीक है. यस, ऑफकोर्स जो आपका लक्ष्मीकांत का 2022 का जो रीडिंग लिस्ट है, that of course I will make sure that I update by February, because अब पॉलिटी is coming to a close, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए. ठीक है. अंडरस्टूड दिस. श्योर. हाँ. यस यस बसीमा. एथिक्स का भी प्रॉपर नोट्स के साथ सब कुछ. February onwards I'll start running, अभी एक हफ्ते से I'll start running case studies also twice a week. For ethics I'll start running case studies also. Please make sure, please make sure, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहें, यूट्यूब से जस्ट बी इन टच. यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर ऑन द वेबसाइट ऑल्सो. बाकी यू हैव माई नंबर, यू हैव माई ईमेल एड्रेस, ये सब मैं कर दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, कल से मंडे ऑनवर्ड्स आई विल रिलीज अपॉइंटमेंट स्लॉट्स. ठीक है. देयर बी ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स, आप मुझे इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं, और आप मुझे ऑनलाइन भी इंडिविजुअली आई कैन सेट अप अ 1-on-1 वीडियो सेशन विद यू ऑल्सो. नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप मुझे ऑफलाइन, यू वांट टू मीट मी इन पर्सन इन द स्टाफ रूम, मैं सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक आई विल मेक श्योर दैट आई गिव यू 15-20 मिनट स्लॉट्स, सो दैट आपका टाइम भी बर्बाद ना हो. आपको मैं लिंक दूंगा, उसमें आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट, आई नो एवरीथिंग इज़ फ्री, डोंट वरी. ओके. ऑल राइट. अंडरस्टूड. ठीक है. ये सब मैं आपको करके दे दूंगा. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ये सारा का सारा कुछ हो जाएगा. ठीक है. अंडरस्टूड दिस. इज दिस क्लियर इनफ? श्योर. 100%. ठीक है. आई विल कीप मीटिंग यू गाइज ऑल्सो. मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर जेन्युइनली माफ़ करिएगा. आई ट्राई एंड गेट बेटर एवरी डे, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई एंड deliver what is relevant for you, because your time is far more important than me showing off my knowledge or me getting into things which are not relevant for you. Okay. And more than anything else, I hope you keep well, keep safe, be happy. ये एक बहुत ही लोनली प्रोसेस है, बट आप लोनली नहीं हैं. यू एटलीस्ट हैव मी विद यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम. परिवार भी है, योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो देयर. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. यू आर गोइंग टू वर्क फॉर दिस कंट्री. देयर इज़ नो बिगर सर्विस देन दैट. आप जो कर रहे हैं वो बहुत लोगों के पास करेज नहीं होता है टू परस्यू सच ए डिफ़िकल्ट करियर. एंड एक बार आपका हो भी जाएगा, द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आर वेरी वेरी crucial for you. The first few years of service are going to be very tough, while all of your colleagues in the private sector are going to enjoy their lives. You will be doing God's work, if there is a God, to help those who need to be helped. Always remember, even when you get into the service, please keep reading, keep learning. अपना ध्यान रखिए. लाइफ में कुछ करें या ना करें, ऑलवेज बी देयर फॉर योर पेरेंट्स. उससे बड़ा कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. राइट. ऑलवेज बी देयर. एंड इट हैज़ बीन अ प्लेजर. इट हैज़ ऑनेस्टली बीन incredibly satisfying. It is मेरी तरफ से, I could not have asked for a better student community than you guys. अगेन अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो माफ़ करिएगा. कभी मैंने डांटा हो आपको तो माफ़ करिएगा. सॉरी. एंड आई विल कीप सीइंग यू. पॉलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी. विल कीप मीटिंग एंड विल कीप टॉकिंग. राइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड आई विल मेक श्योर everything is delivered to you in the right amount of time. ठीक है. थैंक यू गाइज. थैंक यू. मैं देख लूँगा. एवरीथिंग एल्स आई विल टेक केयर ऑफ. इट हैज़ बीन अ प्लेजर. थैंक यू. सी.